बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है और इस पर किस तरह के एमसीक्यूज जो है ईटा में या जेईई के या नस्ट के टेस्ट में आ सकते हैं। तो आइए पहले इन टॉपिक का क्विक रिव्यू करते हैं और फिर इसके साथ जितनी भी एमसीक्यूज पॉसिबल है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिंपली डिफाइन एज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपने सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में अपने एक इफेक्ट को जो है प्रोड्यूस करता है और उस इफेक्ट को हम जो है इस फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, दिस वन। अब याद रखिए, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हम यहाँ पर कोई भी एक और चार्ज रखते जिसकी मैग्नीट्यूड जो हो दिस क्यू नॉट वो वेरी वेरी स्मॉल हो कंपेयर टू दिस चार्ज, तो इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो जाहिर बात है ये जो सोर्स चार्ज है ये अपनी इस फील्ड में जो है इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स को एक्ट करेगा जिसको हम डिनोट करते हैं बाय एफ। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So the force acting by this source charge on this test charge is known as electric field intensity. So electric field intensity is known as the electric force acted by the source charge per unit test charge Q naught is known as electric field intensity, and the unit of electric field intensity is Newton per coulomb or volt per meter. Now सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो याद रखिए, हमारे पास कोई भी एक चार्ज हो लाइक दिस, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो हम फील्ड लाइंस को ड्रा करेंगे और इसकी डायरेक्शन को हम आउटवर्ड रखेंगे कन्वेंशनली। सो दिस इज नोन एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी मिसाल के क्लोरीन आयन हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज हम इनवर्ड की तरफ जो है ड्रा करते हैं। सो व्हेन द फील्ड लाइन इज इनवर्ड इट मींस द चार्ज इज नेगेटिव, बट व्हेन द फील्ड लाइन इज आउटवर्ड इट मींस द चार्ज इज पॉजिटिव। द सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड at negative charge. In the case of a single charge they may start or end at infinity. याद है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक पॉजिटिव चार्ज हो और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइन को हम पॉजिटिव से ड्रा करेंगे और नेगेटिव पर जो है इसको टर्मिनेट करेंगे लाइक इन दिस वन। लेकिन हमारे पास चार्ज सिमिलर हो लाइक दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, देन वी ड्रा द फील्ड लाइन विल बी इन दिस फॉर्म एंड हियर between these two positive there will be a point which is known as neutral point at which no electric force will be acting. सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, तो इसका फील्ड लाइन को हम इनवर्ड की तरफ ड्रा करेंगे और यहाँ पर जो ये रीजन है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। सो दिस इज द फील्ड लाइन फॉर सिमिलर चार्ज एंड दिस इज द फील्ड लाइन फॉर अपोजिट चार्ज। एंड पॉइंट 3, tangent to any point on electric field lines show the direction of electric field at that point. अब याद रखिए हमारे पास ये फील्ड लाइन है, अगर यहाँ पर जो है हम किसी भी एक लाइन को टेंजेंटली ड्रा करें तो दिस शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। द पॉइंट नंबर 4, two field line can never intersect each other because if they intersect the two tangent draw at that point will represent two direction of field at that point, which is not possible. And point number 5, electric force is a conservative in nature, means the work done by electric force in a closed path is equal to 0 or the work done by electric force is independent path. So it means the electric force is a conservative force in nature. And point 6, electric field line are perpendicular to the surface of a charged conductor. Net field inside a conductor is 0. It implies that no field lines enter a conductor. हमारे पास ये कोई भी कंडक्टर हो तो इस पर जब हम फील्ड लाइन को ड्रा करेंगे इसको हम नॉर्मली ड्रा करेंगे, मीन दिस फील्ड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर शुड बी इक्वल टू 0. एंड पॉइंट 7, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन contract lengthwise to represent attraction between two unlike charge. And point 8, electric field lines exert sideway pressure to represent repulsion between two like charges. And point number 9,
the intensity will be more where the density applied is more. ये हमारे पास जो है वेरी स्पीड लाइन है, तो याद रखिए मीन्स अगर इस स्पीड लाइन को हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारे पास स्पीड लाइन है वो एक दूसरे से दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर जो है फील्ड लाइन होती है हमारे पास एक दूसरे के साथ क्लोज है। तो याद रखिए जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के साथ क्लोज होंगी तो मीन इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्ट्रांग होगा। सो इन दिस फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल बी स्ट्रांग, विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। Now we discuss step by step MCQs with the help of electric field and electric field intensity. As shown in the figure, the electric field line of force emerging from a charged body, if the electric field at A and B are EA and EB respectively, and if the distance between A and B is R, then electric field at point A greater than electric field at point B. Electric field intensity or electric field at point A is less than electric field intensity at point B. Electric field intensity at point A equal to electric field intensity at point B divided by R, and electric field intensity at point A equal to electric field intensity at point B divided by R. So as we already discussed, when the field lines are close to each other, it means the electric field intensity at that region will be maximum. So at this point, the field lines are close compared to this field line. So the electric field intensity at this point will be maximum because the field line is close to each other compared to this field line. So the correct option is option A. MCQ number 2, the unit of electric field intensity is equivalent to what? तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, या वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इट मींस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, दिस इज चार्ज, और वोल्ट पर मीटर. सो the unit of electric field intensity is not equivalent to what? So electric field intensity unit is this one, the electric field intensity unit is this one, but these two are not the electric field intensity unit. सॉरी ये जो है ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, सिर्फ ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट नहीं है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट किस तरह है? तो याद रखिए फ्रॉम दिस रिलेशन वी नो दैट न्यूटन पर कूलम, अगर इसके साथ हम मीटर को मल्टीप्लाई करें, वी मीटर को डिवाइड करें, सो दिस बिकम Newton meter means joule, and this is known as coulomb, and this is known as meter. So this one is also the unit of what? Electric field intensity. So only this one is not the unit of electric field intensity, while other three is the unit of electric field intensity. MCQ number 3, a metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The line of force follow the path as shown in the figure. This one, this one, this one, or this one. So option D is correct. Why? Electric line of force are perpendicular to the surface of a conductor. Inside the sphere, no line are present. So only this option is correct because this field line is perpendicular to the surface. This field line is not perpendicular to the surface. This field line passes through the conductor. This field line also passes through the conductor. We know that electric field line never passes through the conductor. So only option D is correct option because the field line is outward and also normal to the conducting surface. MCQ number 4, the figure shows some of the electric field lines corresponding to an electric field. The figure suggests that electric field intensity at point A greater than electric field intensity at point B greater than electric field intensity at point C. Option B, electric field intensity at point A equal to electric field intensity at point B equal to electric field intensity at point C. And option C, electric field intensity at point A equal to electric field intensity at point C, and this is greater than electric field intensity at point B, and this option. So याद रखिए अगर इस क्वेश्चन को इस डायग्राम को हम देखें, सो ये जो रीजन है यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड लाइन है और यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से जो है सेम स्टेटस में है, सेम हालत में है. मीन्स इस पॉइंट के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पॉइंट के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यूनिफॉर्म है, उसका डिस्टेंस यूनिफॉर्म है. तो इट मीन्स at this point electric field intensity and at this point electric field intensity will be same. लेकिन अगर हम इसको देखें ये फील्ड लाइन जो है इस B से जो है वेरियस दूरी पर है, so it means at this point electric field intensity will be small, and at this point and this point at point A and point C the electric field intensity will be strong because these field lines close to each other and same magnitude and greater than at point B. So the correct option is point C, option C. MCQ number 5, the SI unit of electric flux is what? Weber, Newton per coulomb, volt multiplied by meter.
joule per coulomb. We know that electric flux is the dot product of Ea. The unit of electric field intensity is Newton per coulomb. The area is meter square. Or this can be written as Newton meter divided by coulomb into meter. This is known as joule. And joule per coulomb is known as volt multiplied by meter. So the unit of electric flux is what? Option C. MCQ number 6. An electric field can deflect X-ray, neutron, alpha particle, gamma ray. We know that electric force is equal to the product of charge into electric field intensity. अगर हम देखें तो एक्स रे पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू जीरो, तो इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा? जीरो. सिमिलरली गेमा जो है इस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो फोर्स एक्ट ऑन गेमा रे इज जीरो. Similarly, neutron पर भी चार्ज नहीं है, so the force act on the neutron is zero. But alpha particle having two proton, having double positive charge, so the electric force will be act only on alpha particle. So the correct option is option C. MCQ number 7. The SI unit of electric field strength is what? Newton per coulomb, coulomb, AB coulomb, and Newton. We know that electric field intensity equal to F over Q, or electric field intensity is equal to voltage divided by R. The unit of electric field intensity is Newton and the unit of charge is coulomb. So the SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb, which is also equal to volt per meter. So the correct option is option A. MCQ number 8. The electric charge accelerated motion produce what? Electric field only, magnetic field only, electromagnetic radiation, all of the above. तो याद रखिए हमारे पास कोई भी एक चार्ज हो और वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, और इन दोनों फील्ड की वजह से, इसके इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या पैदा होता है? लाइट पैदा होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं. सो इट मीन्स a charge accelerated particle produce electric field, magnetic field as well as electromagnetic wave. So the correct option is option D. MCQ number 9. Angle between equal potential surface and line of force will be what? तो ये हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड जो है इस सर्कुलर पा में हमारे पास इसको हम बोलते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेस, और इसके जो है हम नॉर्मल एक लाइन को ड्रा करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो इट मीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक एंगल 90 डिग्री to the equal potential surface. So it means the correct option is option C. MCQ number 10. The electric charge always reside on what? At the center of charge conductor, at the interior of charge conductor, on the outer surface of charge conductor, या randomly all over the charge conductor. तो याद रखें हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर हो, अगर इस पर हम चार्ज को स्प्रे करें तो उसके जो है आउट सरफेस पर जो है रेजिडेंट इख्तियार करेगा. So the correct option is option C. MCQs 11. An electron enter an electric field with its velocity in the direction of the electric line of force. Then the path of the electron will be a circle, the path will be a parabola, the velocity of the electron decrease, the velocity of the electron will be increase. तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड लाइन है आउटवर्ड. अगर हम यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन को इसके फील्ड लाइन में मूव करें तो याद रखें ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, so this will be attracted by this positive charge. So it means this start motion on this straight line, but it will be deaccelerated, mean its velocity will be decreases. So the correct option is option C. MCQ number 12. Dimensional formula for electric field will be what? We know that electric field intensity is force per unit charge. The dimensional formula of force is m power 1, l power 1, t power minus 2, and the dimensional formula of charge is ampere into t. So by simplify this we obtain this one. MCQ number 13. Which of the following represent the electric field line due to a single positive charge? So we know that a single positive charge field line emerges from a single positive charge normally. So this is a correct option, this one. And which of the following figure represent the electric field line due to a single negative charge? We know that the field line of a single negative charge always radially inward, means हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका फील्ड लाइन हमारे पास किस तरह होगा? उसकी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. दिस वन. सो दिस इज द फील्ड लाइन ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज देन द फील्ड लाइन विल बी इन दिस फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 15. A non-uniform electric field is represented by the diagram at which of the following point the electric field is greatest. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, मीन इन दिस रीजन the electric field intensity is different and the electric field intensity in this region.
Now we need to find out at which point the electric field intensity will be maximum. तो याद रखिए उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा जिस पॉइंट के सराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो वो एक दूसरे के साथ करीब तर हो. तो याद रखिए अगर हम इस पॉइंट डी को देखें तो इसकी जो फील्ड लाइन है इसके अराउंड वो वेरी क्लोज है कंपेयर टू दिस field line and compared to this field line. So the electric field intensity at point D will be maximum because in this region the field line is very close to each other. So the correct option is option D. MCQ number 16. An uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown in the figure. The field line look like what? The field line look like this one. अगर हमारे पास ये कोई भी एक मेटालिक स्फीयर हो और एक फील्ड लाइन में हमने रखा हुआ हो तो कौन सी फील्ड लाइन जो है वो हमारे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस कंडक्टर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बिकॉज द फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग स्फीयर. अगर हम इसको देखें इस फील्ड लाइन को देखें और इसको देखें तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन ए बी और डी जो है इसके फील्ड लाइन इस स्पेयर पर जो है नॉर्मल नहीं है सिवाय इस फील्ड लाइन के जो स्पेयर पर नॉर्मल है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 17. A simple pendulum of period T has a metal bob which is negatively charged. If it is allowed to oscillate above a positively charged metal plate, its period will be what? Remain equal to time t, be less than time t, be greater than time t, be infinite. तो इस फिगर को देखिए हमारे पास एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है इट्स मीन पोजीशन में. इसका वेट हमारे पास क्या है डाउनवर्ड है. अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट को रखें तो एक पर जो है टू फोर्स एक्ट करेंगे. एक इसका वेट होगा डाउनवर्ड और एक इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा. सो इट मीन्स द वेट और द ग्रेविटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इंक्रीज. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इंक्रीज because two force that is electric force and gravitational force act on the metallic bob in downward direction. So when G is increased then time period will be decreased. So the correct option is option A. The positive metal attract negatively charged bob which is added with the gravity force, thus effectively G will be increased and hence time period will be decreased. MCQ number 18. A charge of magnitude 25 coulomb placed at a point. What will be the electric field intensity at a point where 1 picocoulomb charge placed at a distance of 5 meter? We know that electric field intensity equal to K into source charge divided by R square means electric field intensity is independent test charge this one. So यहाँ पर हमने K की वैल्यू को पुट करना है, Q की जगह हमने E वैल्यू को पुट करना है, R की जगह हमने E वैल्यू को पुट करना है. So we obtain electric field intensity equal to 9 into 10 power 9 Newton per coulomb or Newton per coulomb means volt per meter. So the correct option is option A. MCQ number 19. At point P, which is R distance away from the source charge, the electric field intensity is 32 Newton per coulomb. What will be the electric field intensity when a point P is move away to 2R? तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर के. हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक सोर्स चार्ज है और इस डिस्टेंस पर जो है दिस डिस्टेंस द पॉइंट पी एंड दिस सोर्स चार्ज विच इज आर, इस डिस्टेंस पर जो है यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है और ये चार्ज जो है इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सर्ट करता है, दैट इज 32 न्यूटन पर कूलम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू इक्वल टू 32 न्यूटन पर कूलम. नाउ इफ यू इंक्रीज दिस डिस्टेंस टू 2r then electric field intensity will be changed, that is E dash equal to kq divided by r dash square. So r dash equal to 2r, so putting the value of r dash we obtain E dash equal to r dash mean 2r square, so this become 1 by 4r square, or E dash equal to 1 by 4 kq by r square. 1 by 4 this kq by r square is nothing but electric field intensity, that is 32 Newton per coulomb. So electric field intensity will be reduced to what, 8 Newton per coulomb if the distance between point and the source charge increase 2 times. MCQ number 20. The electric field intensity is depend on source charge, depend on test charge, depend on both source and test charge, none of these. We know that electric field intensity equal to F over Q naught. This F equal to K Q naught divided by R square. So Q naught cancel हो जाएगा. So electric field intensity equal to
kq by r square. This is known as source charge. So it means the electric field intensity depend only on the source charge and independent test charge. MCQ number 21. The potential difference between two plates is 50 volt. If the separation between them is 2 meter, then electric field intensity between the plate will be what? ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है. इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है 32 वोल्ट. अब ये दोनों जो है एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है इसके दरमियान में. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू gradient of potential or del V divided by del R, putting the very potential difference, that is 50 volt, del R equal to 2 meters. So by simplify this we obtain electric field intensity equal to 25 volt per meter or 25 Newton per coulomb. So the correct option is option B. MCQ number 22. At which point the electric field intensity is maximum? ये हमारे पास two plates है, this is positive plate, this is negative plate. किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी? H पॉइंट पर, K पॉइंट पर, L पॉइंट पर. सो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए between two plates, that is equal to sigma by epsilon naught, mean the electric field intensity is independent of radius vector r. So it means at each and every point the electric field intensity will be same. Mean at point K, at point L, and at this point H, the electric field intensity will be same. MCQ number 23. The electric field intensity between opposite charge plate may be what? 0, constant, vary, none of these. तो याद रखिए अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके दरमियान एट ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught permittivity of free space and sigma is nothing but the charge density, mean the charge on this metallic surface per unit area is known as sigma. So the correct option is option B. So the correct option is option B, because electric field intensity independent R. MCQ number 24. Which of the following have same dimension? Voltage and electric field intensity, voltage, electric field intensity multiplied by length, voltage, work multiplied by charge. So as electric field intensity equal to voltage divided by R, or voltage equal to electric field intensity multiplied by R, means voltage equal to electric field intensity multiplied by length. So it means the dimensional formula of voltage and electric field intensity multiplied by length will be same. So the correct option is option B. MCQ number 25. The maximum change in electric field intensity between test charge and source charge will be occur if glass insert between test charge and source charge, rubber, water or nitrogen. We know that if we have, this is a positive charge source charge, this is a test charge, and this test charge is r distance away from the source charge, then the electric field intensity will be equal to, at this point, what? Equal to, that is k q by r square. But if we insert a medium between this charge, and the medium is what? Glass, rubber, water and nitrogen, then for which material the change in electric field intensity will be maximum? So we know that change in electric field intensity E dash equal to electric field intensity per vacuum divided by epsilon r डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो अगर हम दोनों चार्जों के दरमियान मुख्तलिफ मटीरियल रख दे, तो याद रखिए वाटर जो है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा है. तो इट मीन्स अगर हम इन दोनों चार्जों के दरमियान वाटर को रख दे, तो इसके दरमियान जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जो है स्ट्रांगली जो है डिस्टर्ब हो जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ नंबर 26. स्टेटमेंट कुछ इस तरह है. ए सोर्स ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 microcoulomb is 5 meter away from a source charge which is from a test charge. This is not source charge, this is a test charge which is an electron. The electric field intensity at position of electron will be what? ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है 100 माइक्रोकूलम. यहाँ पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है, जो कितनी दूरी पर है पॉजिटिव चार्ज से? 5 मीटर की दूरी पर है. सो इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. Putting the value of k, q means this charge, because electric field intensity independent test charge of the electron. So equal to kq by r square. Putting the value and simplify, we obtain 36 into 10 power 3 Newton per coulomb. So the correct option is option C, that electric field intensity at electronic position due to a source charge of 100 microcoulomb, which is 5 meter away from the electron, equal to 36 10 power 3 Newton per coulomb. So the correct option is option C. MCQ number 27. The x show, हमारे पास x जो है पता नहीं कि क्या है, इसको हमने मालूम करना है.
तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है या पोटाशियम आयन है। तो याद रखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका तो कोई फील्ड नहीं होगा। सोडियम जो है हमारे पास एटम है, इस पर नेट चार्ज हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, इसका जो है कोई फील्ड नहीं होगा। क्लोरीन हमारे पास एटम है, न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन पोटाशियम आयन जो है ये हमारे पास बराबर होता है के प्लस के, और हमें मालूम है कि हमारे पास जो प्लस होगा प्रोटॉन होगा उसका फील्ड हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड होगा। सो दिस एक्स शो पोटाशियम आयन बिकॉज पोटाशियम आयन हैव field line just like field line of proton. So the correct option is option D. MCQ is number 28. If voltage between two plates is double and separation half, then electric field intensity will be what? We know that electric field intensity is equal to voltage divided by D. So if we change voltage and separation between two plates, then E will be changed. So E dash equal to V dash divided by D dash. If V dash is double, mean voltage is double, this becomes 2V. Separation between two charge plate is half D by 2. So by simplify this we obtain E dash equal to 4 into V by D. This V by D is nothing but electric field intensity, this one. So the electric field intensity will be increased 4 times. MCQ number 29. If distance between source charge and test charge increase 3 times, then electric field intensity will be what? So we know that electric field intensity equal to Kq divided by R square. So if this show that electric field intensity is inversely proportional to R square, means if R increase n time, then electric field intensity will be reduced to 1 by n square time. So if we increase R 3 time, then E will be reduced to 1 by 9 time. If R increase 2 time, E will be reduced to 1 by 4 time. If R increase 5 time, electric field intensity will be reduced to 1 by 25 time.